Students class 11th, Namaskar. Today's chapter is psychological aspects of physical education. Psychological aspects of physical education. Define psychology. Question is there. Define psychology. Write down various definitions of psychology. So this is a long answer type question. डिफाइन साइकोलॉजी को डिफाइन करना आपने. राइट डाउन वेरियस डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी की जो वेरियस डेफिनेशंस हो वो आपको राइट लिखने हैं. साइकोलॉजी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, साइके एंड लोगोस. साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स का बना हुआ है, साइके और लोगोस का. साइके मीन्स सोल, वेयर एज लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज. Logos means some people say talk also, some study and some knowledge. So psyche means soul and logos means knowledge or study. So combine these two words, we get the word psychology. So the meaning of psychology is studying soul or study of soul. अध्ययन करना किसका? सोल का. सोल का अध्ययन करना. But later on it was renamed as science of soul. Later on it was renamed as study of soul was renamed as science of soul. So psychology is like this, made up of two words, psyche and logos. Psyche means soul and logos means study or knowledge. So psychology word means study of soul or science of soul. So now we are going this one. Humans have the tendency to excel in every field of life. Everybody knows. You people study, you are in 11th class, then you go 12th class, then you do graduation, then you go university because you want excellence in your life. So every human being जो अभी है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और अच्छे से अच्छा काम करना चाहता है. That means wants to excel in life, in every field of life. Many countries work hard to achieve the top position in games and sports. बड़ी सारी कंट्रीज जो है, मुल्क जो है, वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स एरिया में, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में उनका बड़ा वर्चस्व रहे, उनका नाम रहे, टॉप पोजीशन उनकी हो. तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी. एनहांसमेंट in the performance of sportsmen is the focal point of coaches, sports scientists and physical trainers. तो इसलिए एम्प्लॉय किए जाते हैं फिजिकल ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स और कोचेस, ताकि वो स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को और बड़ा कर दे और आगे कर दे और उसमें निखार ले आए. Definition according to Woodworth, psychology is the scientific study of the individual's activity in relation to environment. Psychology is the scientific study of the individual's activity in relation to the environment. This is a definition. According to Crow and Crow, second definition is there. Second definition, Crow and Crow. Psychology is the science of human behavior and its relationship. Psychology is the science of human behavior and its relationship. So these are two definitions. You have to remember these definitions by heart. It is accepted as a science because it involves certain principles. इसको साइंस माना जाता है. किसको? साइकोलॉजी को. इज एक्सेप्टेड एज साइंस बिकॉज इट हैज़ सर्टन पैरामीटर्स विच आर लाइक साइंस सब्जेक्ट्स. लाइक इन्वेस्टिगेशन इज देयर, classification, verification and generalization. So these are the components actually of science subjects. So these are involved in psychology also. Investigation is a classification, verification and generalization, etc. Then sports psychology. Sports psychology is a different subject. Sports psychology is the branch of psychology which is applied in the field of games and sports. So it is a psychology which applies in the field of games and sports. Then there is the improvement in the performance of a sports person depends upon. The improvement in the performance of a sports person depends upon number 1 sports psychology, number 2 sports biomechanics, number 3 sports physiology. The impact and knowledge of exercises on human body, health, fitness, sports training, fatigue and energy on performance of an athlete is determined by the sports physiology.
सो ये तीसरा वाला हमने पहले लिया, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, इम्पैक्ट एंड नॉलेज ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन ह्यूमन बॉडी। तो अगर आपको एक्सरसाइज की नॉलेज है और उसका क्या असर रहता है ह्यूमन बॉडी पर, या फिटनेस पर, या हेल्थ पर, या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर, या फटीग या एनर्जी पर, तो इन चीज़ों से एक एथलीट पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो है ये इंक्लूड होते हैं किसमें, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में। बाकी रहा आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, दिस वी शैल टेक अप टुमारो। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन जो पढ़ा। फिर हम बोले क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन साइकोलॉजी, राइट डाउन वेरियस डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 2 वर्ड्स का बना हुआ है, इसको में एक साइके है, दूसरा लोगोस है। साइके मीन्स सोल, लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज। सो कंबाइन दीज टू वर्ड्स, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल or it is the science of soul. So we have read that humans have the tendency, every human being has the tendency to excel in life, excel in every sphere of life, every field of life. So a person or a human being or people uh, want to excel in sports world also. For achieving excellence in sports, their coaches are needed, sports scientists are needed, and physical trainers are needed. So there are 2 definitions which are worthwhile. Psychology is a scientific study of the individual's activity in relation to environment, is a definition, and second definition is given by Crow and Crow. You must read it, study it. So psychology is a science actually, because investigation, classification, verification, generalization are included here. Now the sports psychology. Sports, as you know, sports itself has its own psychology that we shall take up tomorrow. Thanks a lot.